Welcome back to my channel. I'm Siddharth Ghosh, and in this lesson, we're going to start the chapter Thinkers, Beliefs and Buildings for CBSE Class 12. This is chapter 4 in your history um, book. So let's start. So these are the short notes जो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में बनाए हैं एंड इसको हम पढ़ेंगे इसको हम समझेंगे all the pointers what can be asked in your board exams what can be asked in your pre boards है ना so let's start so Shah Jahan Begum was a Nawab of Bengal who permitted the Europeans to excavate the site of Sanchi Stupa in Bengal. तो यूरोपियंस जब आए थे तो शाहजहां बेगम जो थे जो नवाब ऑफ बंगाल है थे उन्होंने परमिशन दिया यूरोपियंस को टू एक्सकवेट सांची स्तूपा जो भोपाल में है आने के लिए तो भोपाल में जो सांची स्तूपा है सो फर्स्ट पॉइंट The founder of Buddhism is Gautama Buddha and the founder of Jainism is Lord Mahavira. तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है गौतम बुद्ध एंड फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज लॉर्ड बुद्धा so Tipitaka जो है it's the compilation of the teachings which were given by Buddha by his disciples in 3 volumes उनकी 3 volumes थे 3 books थे उसमें so उन्होंने पूरे compilation of teachings उसमें डाली थी that is Tipitaka एंड वो 3 वॉल्यूम्स का नाम है विनया पिताका सुता पिताका एंड अभिधम्मा पिताका तो ये 3 वॉल्यूम्स है The Vinaya Pitaka contained the rules and regulations of the people who joined Buddhist Sangha. So Sangha was basically a place where people used to stay. People used to come here for the teachings of Gautam Buddha ना तो जो वहाँ रहते थे बुद्धिस्ट संघ तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कंटेन करते थे विनय पिटका में सुता पिटका कंटेन्स द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा ये टीचिंग्स ऑफ बुद्धा विच ही यूज्ड टू इम्पार्ट टू हिज डिसाइपल्स जो एक्सप्लेन करते थे अपने डिसाइपल्स को बताते अबाउट बुद्धा के गौतम बुद्धा के टीचिंग्स The Abhidhamma Pitaka contains several philosophical matters. तो कुछ philosophical matters होते थे वो अभिधम्मा पिटाका में कंटेन थे तो ये 3 आपके वॉल्यूम्स होंगे विनय पिटाका कुता पिटाका एंड अभिधम्मा So Siddhartha was a son of the chief of the Sakya clan. Sakya clan में एक सन मतलब सिद्धार्थ एक सन थे चीफ जो साक्य clan के member थे. He later adopted the path of atheism and became Buddha. तो उन्होंने he started meditating. He started मतलब जब वो बोधि थी के अंदर जब उन्होंने when he found enlightenment तो उन्होंने उनका नाम गौतम बुद्ध हो गया सिद्धार्था से on the path of meditation to reach the state of salvation he was successful in attaining enlightenment and came to be known as Buddha. So I told you कि उन्होंने एक path लिया of meditation to reach the state of salvation. तो उन्होंने meditation का path choose किया to reach the state of salvation and he was successful मतलब he got he found enlightenment under the Bodhi tree and which after later on he came to be known as Buddha. So Gautam Buddha believed the social world is created by humans. जो social world है हमारा which is created by humans, he did not believe that the social world is of divine origin. तो उनको ये बिलीव नहीं हुआ था जो सोशल वर्ल्ड जो है वो डिवाइन मतलब उसका ओरिजिन डिवाइन भी एकदम नेचुरल नहीं इट इज क्रिएटेड बाय अस मैन मेड तो इट्स नॉट नेचुरल
So Gautam Buddha advised the kings and Gahapatis to exhibit humane and ethical behavior. So गौतम बुद्ध जो थे ही एडवाइज द किंग्स एंड गाहापतीज क्या करने के लिए कि यू डोंट डोंट मतलब टू एग्जिबिट ह्यूमन एंड मतलब ये बिहेवियर जो है should not be there, right? So the women who became members of the sangha ultimately became the teachers of dhamma, and later they became their theories and attained liberation. So the women जो संघा में रहते थे वो मतलब संघा के मेंबर हो गए थे बुद्ध संघा के वो टीचर्स मतलब ही they became the teachers of dhamma and later they became their theories and वो attain they attained liberation. So Dipavasma and Mahavasma are the Buddhist chronicles that contain regional histories of Buddhism. तो जो हिस्ट्री रीजनल हिस्ट्रीज हैं ऑफ बुद्धिज्म जो क्रॉनिकल्स हमारे जो सोर्सेज हैं दीपासुस्मा एंड महामसा दीज आर द बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स. Fazia and Zhuangzhang were the Buddhist pilgrims who came to India to study the Buddhist culture and other cultural traditions of India. So Fazia and Zhuangzhang, they were the Buddhist pilgrims जो इंडिया आए थे टू स्टडी द बुद्ध मतलब लाइक टू सी टू रिसर्च मोर अबाउट बुद्धिस्ट कल्चर एंड अदर कल्चर ट्रेडिशंस ऑफ इंडिया. So over the centuries, the teachings of Buddha has influenced people in Japan, China, Korea, Central Asia, Sri Lanka, Myanmar, Thailand, and Indonesia. So मतलब जो बुद्धा के जो टीचिंग्स हैं गौतम बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं वो बहुत सारे पीपल को इन्फ्लुएंस किए इन अदर कंट्रीज ऑल्सो एज वेल जैसे चाइना हो गया फिर जापान हो गया सेंट्रल एशिया हो गया कोरिया हो गया श्रीलंका म्यांमार थाईलैंड एंड इंडोनेशिया. So the debates and discussions of the Sanghas were not recorded during the earlier period of Buddhism. जो डिबेट्स और डिस्कशंस जो होते थे संघा में बुद्धिस्ट जो बुद्ध संघा में जो सारे डिबेट्स हुआ करते थे विद अदर मेंबर्स डिस्कशंस होती थी वो दे वर नॉट रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द अर्लियर पीरियड मतलब बहुत पहले अर्लियर पीरियड के टाइम पे बुद्धिज्म वो रिकॉर्ड नहीं करते थे बिकॉज आफ्टर द डेथ of Buddha that his teachings were compiled by his disciples. मतलब जब गौतम बुद्ध जी का डेथ हो गया तो उनकी जो टीचिंग्स थी they were compiled and in text and उसको हम बोलेंगे त्रिपिटका जो हमने बोला compilation of teachings of Gautam Buddha. The Ajivikas are the fatalists who believe that everything in the world is predetermined. So Ajivikas, they thought that everything in the world determined. तो इनको हम बोलेंगे फेटलिस्ट एंड ऑन द अदर हैंड लोकयुत्स दे हैव मटेरियलिस्टिक अप्रोच उनका अप्रोच मटेरियलिस्टिक था that do not consider that every life of an individual is equal. मतलब ये कंसिडर ये नहीं कंसिडर करते थे कि जो एवरी लाइफ लाइक द आजीविकास दे यूज्ड टू थिंक दैट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड वो प्री डिटरमाइंड है बट लोकल यूथ्स जो थे they have this materialistic approach and they do not consider that every life in this world is of an individual is predetermined. The followers of older tradition of Buddhism is known as Thera Theravadins. These are the people who follow the path of the old respected teachers as the Theras. जो पहले बहुत ओल्ड ट्रेडिशंस जो बुद्धिज्म मतलब जो बुद्धा की टीचिंग फॉलो करते थे उनका थेरावाद उनको हम थेरावादी से जानते हैं. These are the people who follow the path of the old respected teachers. बहुत जो उनके टाइम पे जो टीचर्स थे उनके used to follow their path. So Tirthankars are genuine teachers who guide people about the worldly affairs to spend the basic philosophy of Jain tradition. The total number of Tirthankars in the Jain tradition is 24. Mahavira is considered to be the last Tirthankar.